हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। और हाँ, आज मैं सोच रहा था भाई कि मैच होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा होगा, लेकिन यार हम तो आते हैं बिकॉज वी ऑलवेज काइंड ऑफ डिस्कस लॉट्स अपार्ट फ्रॉम द मैच भी, और वील बी बिल्डिंग अप टू द कमिंग मैचेस एंड व्हाट नॉट। और अगेन आप देख रहे हो भाई मेरे पीछे यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड भी चल रहा है, तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं एब्सोल्युटली। लेकिन द गुड न्यूज इज दैट इंडिया का मैच हो रहा है। यस, इज इट रिस्की? अब आप लोग बोलिए। आप देख रहे थे पिच कंडीशंस कैसे है, दैट इट वाज अ वेट आउटफील्ड, बट नॉट जस्ट द वेट आउटफील्ड, आई थिंक इट वाज क्लोजर टू द पिच एज वेल। जो रन अप होता है ना बॉलर का, तो वो थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन लुक्स लाइक द मैच इज स्टार्टिंग हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ इट्स स्टार्टिंग। लेकिन मीनवाइल पाकिस्तान इंग्लैंड के लास्ट ओवर्स हो गए फर्स्ट इनिंग से, इंटरेस्टिंग होगा। एंड टॉस होगा 9:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डेफिनेटली। अरे डरेन, बिग अप डरेन, कैसे हो? एंड या बिल्कुल अली गेमिंग आ गए आ गए भाई, जस्ट अबाउट। सौरदीप भी 8 ओवर्स मैच, बिल्कुल 8 ओवर्स मैच है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एम्पायर ने बोला है भाई मैक्सिमम 2 ओवर्स एनी बॉलर, तो प्रीटी श्योर 5 बॉलर्स तो यूज करना आवश्यक है, राइट? मिनिमम आई थिंक वो बोलना भूल गए एम्पायर। लाइक आई एम नॉट श्योर दैट दे कैन बोल 4 बॉलर्स विद 2 ओवर्स ईच, कैन दे? आई एम जस्ट लुकिंग एट द यू नो या आई डोंट थिंक वो मेंशन किया गया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एनीवे, लेट्स सी व्हेन डिटेल्स कम आउट। लेकिन मीनवाइल ऑफ कोर्स पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। सो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इंडियन फैंस हो भाई, पहले बोलिए व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द इंडियन लाइनअप टू बी? और 8 ओवर्स मैच, इज इट गोइंग टू हेल्प एनीवन? सच में आई डोंट थिंक इट विल हेल्प एनी डेथ बॉलिंग व्हाट नॉट। लेकिन हु नोज भाई, कल को अगर ऑस्ट्रेलिया में इन द वर्ल्ड कप, you know a similar thing happens. I know chances are less in Australia to happen this way, बारिश आ जाए और whatnot, in those conditions. लेकिन अगर reduce होता है गेम, तो मे बी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, तो इट कैन बी प्रैक्टिस फॉर दैट। लेकिन रियली ये नागपुर के क्राउड के लिए हो रहा है, मतलब दे हैव टू गिव इट समथिंग। और बाय द वे, नागपुर में आई हर्ड द स्टेडियम इज रियली आउटसाइड द सिटी। सो आई थिंक बहुत सारे सिटीज में यही है आजकल। लेकिन टॉक अबाउट दिस मैच एज वेल। भाई पाकिस्तान, क्या लग रहा है भाई? बाउंड्री हो गया यहाँ पे इंग्लैंड का भाई, डकेट ने मारा है, लेकिन कोई नहीं। क्या लग रहा है मतलब लास्ट मैच में? आई डोंट नो इफ यू ऑल फॉलोड, लेकिन देयर वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 200 से ऊपर ये चेज किया भाई पाकिस्तान ने विद 10 विकेट्स इन हैंड। बाबर आजम ऑब्वियसली द मैन। लेकिन इस मैच में क्या लग रहा है, वापस से 200 हो जाएगा? आई थिंक प्रीटी श्योर दे शुड स्कोर 200। मोइन अली इज कमिंग नेक्स्ट, सैम करन इज कमिंग नेक्स्ट। उसके बाद तो लुक्स लाइक दे विल एब्सोल्युटली डू दैट। Hi to Vishal Tibari. 8 over match is bugging rather than cancel it. Rather cancel it. पता नहीं यार. I think the other way around there. मतलब again मैं as a viewer देख रहा हूँ. I know, not thinking like basically someone who's concerned for the team. हाँ, it might not really help the team, but at some point in time, वही है, मतलब you should be ready for different kind of conditions, different situations, or you never know. This thing can happen again, in the World Cup or maybe in the future. और मैं तो बोलता हूँ जसप्रीत बुमराह के लिए प्लस पॉइंट है। इज इट टू रिस्की फॉर हिम कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी? लेकिन रादर मैं तो बोलूंगा अगर 2 ओवर भी मिलते हैं प्रॉपर मैच कंडीशन विद क्राउड बीइंग देयर, ये थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, रिमेंबर भाई, बोलो ही हैज नॉट बीन मैच फिट। और आई डोंट, 2 ओवर्स से कुछ होगा नहीं, लेकिन वही है, जस्ट गेटिंग द फील ऑफ द प्रॉपर T20 इंटरनेशनल प्लस इवन हर्षल पटेल। तो दैट्स व्हाट मैं बोलूंगा, ओनली काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी। हेलो टू आदर्श। आदर्श कैसे हो भाई? ऑलमाइटी ब्लूज एफसी के मेंबर आदर्श, वेरी वेरी गुड टू सी यू ऑलवेज। क्रिश इन द हाउस एज वेल। Okay, if you want to succeed in Australia, only bigger boundaries are not enough. Pitch conditions should also be like Australia. Good point. Cameron Green is one for the future. Australia management didn't give them the green light for IPL, and they are molding him for the future. Yes, yes. But off topic, Milan manager saying Empoli match is more difficult than Chelsea. हाँ, मतलब I don't think it's what he meant. I think probably he meant कि भाई वो मैच पहले, I think that's what probably he tried to say, something like that. लेकिन हाँ, मतलब I would rather talk about that than Chelsea. I don't think it came across rightly. मतलब again, I might be wrong, लेकिन that's what my understanding is therein. Duckett is amazing भाई, he's just attacking everywhere. हाँ, मतलब दिख ही रहा है मुझे। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में क्या लग रहा है भाई? उस्मान कादिर is kind of good, but again, मतलब he has conceded a lot of runs, so I'm not sure about that.
तो भाई मीनवाइल टिल द टॉस हैपेंस, टॉस होने वाला है इन द नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स, एंड ऑफ कोर्स वी हैव एनएस स्पोर्ट्स टीवी इन द हाउस, वन आवर इन द हाउस। और हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली सब लोग को ये भी रिमाइंडर है, वी आर लाइव लेटर टुनाइट ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी भी, तो वहां पर सेट कर दिया पेज भाई, एवरीवन कैन गो एंड सेट अ रिमाइंडर, एंड दैट इज फॉर द नेशंस लीग ऑफ कोर्स, क्योंकि इट इज अ बिग मैच फॉर इंग्लैंड वहां पर, टॉक अबाउट इंग्लैंड इन क्रिकेट बट इंग्लैंड इन फुटबॉल भी। ओके, युवराज बोल रहे हैं, Bhuvi, Arshdeep, Bumrah, Bishnoi and Aksar is the only right combination to go in the T20 World Cup. यार बिश्नोई है ही नहीं है युवराज, बिश्नोई is in the standbys. हाँ मतलब you won't want to wish an injury to get Bishnoi in, right? मतलब honestly on form, I don't disagree. Because again, Harshal Patel hardly cricket खेले in the last couple of months, and Arshdeep has played a lot. He has kind of had a mixed bag, लेकिन वो he is the only option. Bhuvi again only option. बुमराह अगेन ओनली ऑप्शन, भाई हमने एक्स्ट्रा ऑप्शन लिया ही नहीं है भाई, क्या बोले हम। एनीवे, अक्सर हैज लुक गुड इन लास्ट मैच, ऑफ कोर्स बहुत मतलब द सोल बॉलर लुक गुड इन लास्ट मैच, तो देयर आई एम थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव। लेकिन यार बहुत इंटरेस्टिंग, सब लोग आप बताइए, आई एम जेन्युइनली थिंकिंग दैट अगेन हम बात कर सकते हैं। और हाँ बाय द वे, मैं सोच रहा था फीफा स्ट्रीम करने का यार ऑलमोस्ट, लेकिन फिर मैं सोचा यार नहीं नहीं मैच होने वाला है। Wow, wow, interesting. Yesterday I slept at 4. Well, me too, bro. Me too. Darren, कोई नहीं. Are we having? Yes, we are having an 8 over game. Definitely laughing in the corner. Usman does get because, but the problem is he concedes a lot of runs. हाँ मतलब अली गेमिंग, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान रिक्वायर अ बॉलर लाइक दैट, मतलब आई एम दैट वे, मतलब यस कंसीडिंग अ लॉट ऑफ रन्स इज नॉट ग्रेट, क्योंकि पाकिस्तान स्पेशली, हाँ लास्ट गेम अलग चीज थी, लेकिन वही एक्सेलरेशन इतना होती नहीं, टॉप ऑर्डर, but I still feel that while bowling they need a wicket taking bowler, but again मतलब you would argue that नहीं यार भाई शादाब खान है तो क्यों चाहिए आप अपने को, नहीं। Later today, okay, I'm going to do bro, but I think I'm probably going to be doing with Shrey. I promised him, but anyway, Nipun, big up to you. Of course we have to plan this, bro. We have to plan, and of course especially for the members of Almighty Blues FC, this is something pending. Again, I'm just waiting for Shrey to kind of figure out whether we'll do a Discord or on the stream, of course. Nipun, big up to you. Absolutely, and yes, people do check out any sports TV as well. Also now, pitches across Asian conditions are more likely becoming batting friendly in second innings. You know what, Vishal? It's throughout cricket, भाई. Cricket में something has got to change यार. मतलब एक I don't know, आप लोग बोले क्या इनोवेशन चाहिए क्रिकेट में? हाँ पहले 8 साढ़े 8 बजे शुरू होते थे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान में 8 साढ़े 8 बजे शुरू होते थे। अब मैचेस थोड़ा जल्दी शुरू हो रहे हैं, आधी घंटा एक घंटा जल्दी शुरू हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट ड्यू फैक्टर, ठीक है, वो एक चीज है। और एक और भाई, आई डोंट नो मैन, वेदर दे शुड ट्राई T20s फॉर maybe day matches on weekends. That's something that मैं बोलूंगा, मतलब I don't know, I'm just putting it across. But T20 internationals होने चाहिए day matches, especially on weekends, नहीं? Would you agree with that? Saturday Sunday तो भाई डे मैचेस कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू बहुत ही मेजर फैक्टर हो जाता है। I 100% agree there, लेकिन वही है, will that atmosphere be the same? I don't think so. So it is difficult. I know there was an indoor stadium tried also in Australia, लेकिन unfortunately भाई ड्यू और भी ज्यादा आ रही थी उससे, so I don't think it worked as well. Mayuk in the house. Mayuk, nice to see you. No, Shadab is there. He also gets wicket while giving way less runs. हाँ, but वही है, आप नवाज और शादाब को रखोगे only two spinners, or Ali Gaming, would you go for Pakistan? Bhai, you would want Usman. Let me know in that, because मेरे ख्याल से भाई, as much as Nawaz you can count him, क्योंकि he's a find for in the recent Asia Cup, लेकिन is he that good of a bowler? Just let me know in the chat as well on that. Indian cricket team is missing some middle order batsmen who can bowl to provide balance like UV and Raina. हाँ मतलब पता नहीं कहाँ गए यार, एक समय में होता था। युवराज मेक्स अ ग्रेट पॉइंट, if you remember especially World Cups, and I know लोग बोलेंगे रॉबिन उथप्पा also just retired recently by the way, or I had the lucky, मतलब I was lucky enough to kind of rub shoulders with Robin Uthappa. But having said that, देखिए Robin Uthappa bowled in that bowl out, he could roll his arm over in domestic cricket. In domestic cricket also, did anyone kind of bowl among the players? रोहित शर्मा यूज टू, लेकिन रोहित शर्मा की लाइन लेंथ ऑफ फिटनेस नहीं है रिसेंटली। तो विराट कोहली भाई खुद ही बोलते इज द वर्स्ट बॉलर इन द एंटायर वर्ल्ड। एक्शन तो मतलब अजीब सा है, बॉलिंग ऑफ द रॉन्ग फुट ऑलमोस्ट, लाइक लाला अमरनाथ। लेकिन एनीवे भाई, where are those players? We had UV, you had Raina, you had Dinesh Mongia at a time.
मतलब काफी लोग थे भाई. आई रिमेम्बर बैक इन द डे ऋषिकेश कानितकर थे. तो वी हैड a lot of people, Sehwag of course who could bowl, Sachin of course who could bowl. Somehow bowling नहीं हो रही. मतलब again मैं तो बोलता हूँ युवराज, the reason being even Rohit etc have stopped bowling is because now batsmen are waiting to hit the bowler. That is how the conditions have changed. That is how the situation has changed T20 क्रिकेट के बाद में. इतना बड़ा है ना. तो आई थिंक इट इज मच मोर रिस्कियर एंड दैट मैं नोटिस किया हूँ बिकॉज आपको याद है तो maybe around 10 years back, maybe around 15 years back, Chris Gayle in one day cricket used to bowl a lot. ठीक है, लेकिन after T20s, I don't know, he stopped bowling. Maybe it was his fitness for sure. लेकिन साथ में it was predictable. People were able to hit more because यार mindset अलग थी once T20 cricket started more. Okay, भैया, when will Chelsea play? Waiting, bhai, waiting. कोई नहीं. It's just over a week. Coming soon. Anyway, New Delhi is an hour ahead of Lahore. We have to keep that in mind. हाँ, that is there. Again, half an hour है ना? Half an hour है भाई. जहाँ तक मुझे याद है. Correct me if I'm wrong, people. I think half an hour ही है. लेकिन again, तो यहाँ पे हाँ, आज भी मैच अगर पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है हाफ एन आवर ही बना नहीं तो 7-7:30 पाकिस्तान में शुरू हुआ है, राइट? अर्ली गेमिंग, इफ यू कैन जस्ट कंफर्म दैट. आज मैच पाकिस्तान का, तो आई थिंक इट्स लिटिल बिट अर्लियर देन 8-8:30 जो होता था पहले. नहीं भैया, व्हाट अ वेस्टफुल डे. कुंडे इंजर्ड, डिपाई, डियोंग इंजरी न्यूज एंड अ रेनी डे विद ड्रिजलिंग. कोई नहीं यार, मतलब संजीव, इंजरी इज पार्ट ऑफ फुटबॉल, ठीक है. और विद 5 सब्स्टिट्यूशंस इट इज only better to kind of expect that. Unfortunately that's a reality. लेकिन yeah, I am more sad obviously because of Depay and De Jong, क्योंकि Depay काफी अच्छा लगे थे भाई उस मैच में. मतलब जो पोलैंड के साथ हमने जो वॉचअलोंग किया था संजीव कल रात को, बहुत अच्छा लगे थे इन माय ओपिनियन. बहुत अच्छे 1-2s खेले थे. So little bit very what do you say, as in disappointed. लेकिन at the end of the day I don't think this is a bad period. I know कोई भी इंजरी चाहता नहीं है, लेकिन it's not a very bad period to get injured. I don't think they're like very long term injuries anyway. Sanjeev, कोई नहीं. 8 overs wala juice confirmed. Yes, thanks Lucy for coming on. Absolutely, yes, it's confirmed. Toss होने वाला है 7 minutes में. Do you remember there used to be this concept, yeah, into 2 of runs जितने भी पड़े, for example 16 runs पड़े तो it will be considered 32. वो लाना चाहिए. fun captain can choose कोई भी over for this. Okay, I'm not sure what concept are we talking about. Are we talking about Hong Kong sixes, Mudit? आई डोंट नो व्हाट यू आर रेफरिंग टू. लेकिन अगेन हम तो मतलब मैं खेलता था भाई बुक क्रिकेट एंड अदर थिंग्स हमेशा, तो आई थिंक वहां पर हम करते थे सब. लेकिन इनटू 2 ऑफ रन्स जितने भी पड़े, इंटरेस्टिंग. आर यू टॉकिंग अबाउट पेनल्टी रन्स? आर यू टॉकिंग अबाउट द न्यू आईसीसी रूल्स? आई डोंट नो. चिन्नस्वामी एट डे एंड एबीडी विराट गेल. अरे भाई मुझे याद है डेरेन. अगेन रिमेंबर आरसीबी हैज दैट थिंग ना, इन द ग्रीन जर्सी दे प्ले द वन मैच. तो भाई वो ग्रीन जर्सी वाला मैच मोर और लेस डे मैच होता था. And it used to be so fun as a Chinnaswamy, yaar, matlab, with those guys really belting out of the park. Again, day games can only make it fair as cricket is a pitch and climatic conditions depend game a bit. Yeah, बिल्कुल. मतलब again, लेकिन वही है, day games में even you and me for example, भाई अगर हम जा रहे हैं मैच देखने के लिए, will we go enough? इतना मतलब I'm not sure. Again, monsoon, when you know that monsoon में शाम के वक्त बारिश आनी है, we know that, that's a fact. होता है, मतलब अगस्त सितंबर में इंडिया में होता है. तो shouldn't they have planned little day games? Trust me विशाल, मतलब मैं पता नहीं आप लोग अग्री करते हो नहीं. yes, स्पेशली नागपुर में. चलो मैं एग्जांपल देता हूँ. आज ये मैच नागपुर में, बाय द वे इंग्लैंड का पाकिस्तान का मैच चल रहा है भाई. हम साथ साथ में ये भी देख रहे हैं. यहाँ पे बाउंड्री हो गया है इंग्लैंड का. 14 ओवर्स दे आर, मैं वो साथ में लगाओ क्या स्कोर कार्ड, पता नहीं, देखते हैं भाई. 143 हो गया, 143 for 3. तो लुक्स लाइक आप लोग सब लोग इन द चैट लेट मी नो हाउ मच विल इंग्लैंड स्कोर. अभी भी डकेट और ब्रुक मार रहे, तो लेट मी नो इन द चैट. 6 ओवर्स बाकी है. 6 ओवर में विल दे बी एबल टू गेट पास्ट मे बी 215? लेट मी नो. लेकिन वही है. तो कमिंग बैक टू विशाल्स पॉइंट, देखिए नागपुर में अगर सिटी के बाहर है, पुणे में आई नो सिटी के बाहर, आई नो काफी सारे सिटीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोहाली भी चंडीगढ़ से बहुत दूर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट. तो देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहां पर एनीवे जो लोग जाते हैं मैच के लिए, दे एनीवे गो एंड टेक अ छुट्टी एंड गो. वो फैक्ट है. मैं खुद फेस कर चुका भाई पुणे में जब जाता था मैचेस के लिए. तो you have to basically take bunk your school, bunk your office, and you have to go. You cannot even take a half day. Well, that's a reality.
हाँ मे बी अगर अर्ली आप काम करते हो और अर्ली स्कूल जाते हो तो मे बी हाफ डे एट बेस्ट, लेकिन एनी वे यू हैव टू टेक हाफ डे और वन डे ऑफ, ठीक है? तो व्हाई नॉट मेक इट अ डे गेम? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यस, व्यूअरशिप ऑन टीवी, ऑफ कोर्स दैट मैटर्स एज वेल, लेकिन प्रिटी श्योर जो क्रिकेटिंग फैंस हैं इंडिया में वो एनीवे विल वॉच यार, मतलब एटलीस्ट T20 तो वॉच करेंगे. हाँ, टेस्ट मैचेस तो होते ही डे में, तो T20 आई थिंक विल वॉच अगेन. इंडिया के मैचेस में बोल रहा हूँ, एटलीस्ट द होस्ट नेशन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? टुमारो अर्जेंटीना वॉच अलोंग. देखते हैं भाई अर्जेंटीना का. कल अगेन वीकेंड है ना, तो वीकेंड में आई वाज ट्राइंग टू गेट अचिंत एंड गुरुजी's अवेलेबिलिटी. आई मैसेज्ड अचिंत. आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग हु एम आई टुमारो इफ पॉसिबल, लेकिन अभी तक जवाब नहीं है. हाँ, इफ नॉट वी आई वाज एनीवे प्लानिंग टू स्टार्ट आवर वर्ल्ड कप सीरीज एज वेल. लेकिन हाँ, इफ अगर दोनों ही नहीं होगा तो दिस विल बी देयर, डेफिनेटली होगा. अगेन टुडे इज लुकिंग लाइक इट विल बी 200 रन्स इन पाकिस्तान इंग्लैंड. हाँ, बिल्कुल. रोहित हैज स्टॉप बॉलिंग, विराट कैन बॉल एंड थिंक सूर्या कैन स्पिन. हाँ मतलब कोई भी नहीं कर रहा भाई, पता नहीं क्यों. हेलो जेडारे, कैसे हो? नाइस टू सी यू एज ऑलवेज. आई प्रोबब्ली नीड टू शिफ्ट टू बैंगलोर फॉर जॉब इन कमिंग डेज. ओके ओके ओके, फेयर इनफ यार. अगेन अरित्र मुझे डीएम करिए यार. अरित्र, डू डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. अगेन आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट happy to help as much as I can. Yeah, Aditya, much love to you. Excited for Chelsea under Potter. Well, Rishabh, I'm glad you're excited, bro. I am excited to see what he does in the coming days. लेकिन यहाँ पर वाइट बॉल हो गई है, कोई नहीं. आई हैव टू से दैट until वो कुछ करे ना, वाओ, मतलब एक्स फैक्टर दे थोड़ा, दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट मेरे लिए अभी तक थोड़ा सा अभी तक रखा हो अपने पास. मतलब आई एम कीपिंग इट क्लोज टू माय चेस्ट. आई एम नॉट काइंड ऑफ रिएक्टिंग टू सून. यस, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, नो टू इज अबाउट इट. लेकिन हाँ, I just want him to actually do. I don't want him to do an AVB. जो AVB आके किए थे, remember AVB जब आए थे, he was supposed to be one of the best tacticians in Europe. यहाँ पे बाउंड्री हो गया भाई एक और ब्रुक का. इंग्लैंड पेल दे रही है भाई लास्ट फ्यू ओवर्स में. Within 15 overs they have completed 150. Talk about that. Okay, Graham Potter sacked after losing a match on FIFA 23. Burley was furious. Oh my god. Shame, man. मैं एक सेकंड सोचा, is it for real? Indian management should mold Deepak Hooda as he can bowl too. Can't understand why he's not given a chance to bowl. युवराज वही है, मैं मुझे लग रहा है ना, देखिए the way batsmen, आज के batsmen look at those 3D cricketers as basically lollipop bowlers. जैसे केविन पीटरसन unfortunately बोलते थे to युवराज सिंह पाई चक्कर, which obviously wasn't true. लेकिन वैसे बेसिकली आजकल captains are little bit circumspect to give bowling to someone who cannot kind of confidently bowl 4 overs. So again, Deepak Hooda, it's him who has to tell the management that भाई मुझे bowling भी दो, मैं all-rounder हूँ. He has to voice it out more. Is he that kind of character? I doubt it, Yuvraj, from what I know. In October, we have Madrid buy-in. Inter and two of our crucial players are injured. I know the El Clasico is there, but again, मतलब I'm not saying that भाई ये क्रूशियल नहीं है अली गेमिंग, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग बार्सिलोना का एक सेकंड के लिए बात करते हैं क्विकली. देखिए, बाय द वे टॉस होने वाला है, मैं वो लगाता हूँ भाई, एक सेकंड. टॉस होने वाला है, होपफुली हो रहा है ना. हाँ, आ तो गए हैं लोग. अच्छा चलो, सेकंड इनिंग्स है 10-14 to 10-48, फर्स्ट इनिंग्स है 9:30 to 10-4, और टॉस के लिए वेट कर रहा है भाई रोहित शर्मा, लेकिन टॉस शुरू क्यों नहीं हो रहा है? होने वाला है, लुक्स लाइक होने वाला है. एनीवे, लेट मी नो अगर अपडेट आता है. देखिए भाई, कुंडे, डिपाय और फ्रेंकी डियोंग, इन माय ओपिनियन, मतलब अगेन ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं, कंसिडरिंग और अस्यूमिंग कि कोई और इंजर्ड नहीं हो, आई थिंक यू हैव अ एज गुड एज 11 विदाउट देम, दैट इज बार्सिलोना. आप देखिए, कुंडे हैज बीन ब्रिलियंट, बट आई एम सेइंग दैट अराहो, क्रिस्टियनसन, एरिक गार्सिया, I think they have been decent as well. I don't think they've been bad as such. हाँ, against Real Madrid, you want the best of the best. लेकिन again, Benzema is coming back from injury just from them. यहाँ पे टॉस हो गया है. Again, Depay to hardly starts, but looks like India has won the toss. India has won the toss, and obviously, I think we should bowl first because हमें अगर target पता है तो better होगा in the 8 overs match. Plus the fact that maybe 8 ओवर में थोड़ा सा ड्राई ओवर हो जाए पिच. आई नो, अगर बारिश नहीं आती तो दैट इज. कुंडे 2 to 3 weeks. Yes. Premier League is ours. Wow, Darren, wow, big up यार. I hope. अरे Matada United, nice to see you as always. Big up, absolutely. गली क्रिकेट में रन्स डबल, या बिल्कुल बिल्कुल.
यार श्रेय इसमें नहीं आने वाले, श्रेय अभी अवेलेबल नहीं है. He will come on the other stream, definitely. You can do Brazil game, watch along, and Argentina game in 5 in the morning, so I can understand you won't be able to cover it. Oh my god. मैं टाइम चेक नहीं किया यार विशाल, मैं चेक करके अपडेट करता हूँ वहां पर. We have faced Inter twice, but we have to face. Arey, Inter Milan is not so difficult, bro. Sanjeev, chill. I know, matlab, it's a Champions League night, but it will not be so difficult, bro. Matlab, definitely better than Bayern, I would say. But Inter Milan, I will not count. Or दो games के लिए, come on. I think Christensen replaced Thiago Silva in a Champions League final seamlessly. As much as I may not like the guy anymore, लेकिन pretty sure he's decent, यार. Don't worry about it. और राइट बैक आपके राव खेल सकते हैं बहुत अच्छा, टेंशन नहीं है. एंड यू हैव राइट बैक साइड यार, रिमेंबर. बट इंडिया हैज वन द टॉस एंड चोज टू बोल. ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट्स कर रहा हूँ यहाँ पे. Who's your favorite coach in except Louis and Gal? भाई favorite coach, I think Hansi Flick has to be one of the best coaches here in recent times. मतलब he is underrated in my opinion. Hansi Flick for me, मतलब मुझे अच्छा लगता है the way he plays football, with this team. लेकिन हाँ, जर्मनी के पास वो है नहीं पर्सनल, अनफॉर्चुनेटली इस बार. Okay, how Depay is crucial? Yeah, बिल्कुल, he's not at all crucial. It's only Kunde, I would say, who has had a really. I mean, even De Jong. मतलब, the fact is De Jong, Pedri, Gavi, and you have Busquets. But anyway, again, assuming they should be fit as well. That's the whole point I was trying to make. But again, थोड़ा सा thin है. I know you would want ideally a squad of at least 20 plus who are very very fit. England पेल रही है यार. Okay, England is also पेलोफाइन. क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? आई थिंक हो गया 158 फॉर 3 इन 15.3 ओवर्स. हाँ, तो मतलब नॉट मच चेंज वहां पर. अरे सायन, कैसे हो भाई? नाइस टू सी यू. ओके, लेट मी एक्चुअली. हाँ, मतलब संजीव, आई हियर यू. मतलब फुटबॉल एंड ऑफ कोर्स इंटर मिलान को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, बट सर्टेनली इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज व्हाट कुड हैव बीन, इन अ प्रॉपर इंटर जो अंडर कॉन्टे थे. दैट इज नॉट द इंटर. भाई बुमराह कम्स इन फॉर यादव, ठीक है. एंड आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड. उमेश यादव आफ्टर द स्टार्ट ही हैड, डिस्पाइट वो विकेट्स लिए थे सेकंड ओवर में, तो बुमराह कम्स इन फॉर यादव एंड भुवी मिसेस आउट टू. इंटरेस्टिंग दैट. इज इट? आप उसका कॉन्फिडेंस मानना नहीं चाह रहे, 2 ओवर में क्या तो गेन करेंगे, तो इसलिए भाई ही इज नॉट प्लेइंग भुवी, एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. सो दैट मींस दैट लुक्स लाइक maybe it will be Deepak Chahar. Is Deepak Chahar playing today? I think probably Deepak Chahar start कर दे क्या? Does anyone know? किसी ने सुना है क्या है टीम? मैं यहाँ पे क्रिक बस देख रहा हूँ जो बहुत ही स्लो है for whatever reason to update the team, but anyway, अभी तक आया नहीं टीम, लेकिन I hope Italy wins today. Let's see भाई. एक बंदा है नॉन्टो नाम है ना उसका, बहुत अच्छा बंदा है, लगा यार मुझे नेशंस लीग जब हुआ था समर में. तो आई थिंक ही इज साइन फॉर लीड्स एंड ही कैन डू वंडर्स इन माय ओपिनियन. वॉच आउट फॉर हिम. बट हम वॉच अलोंग करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे. वॉचिंग इंटरनेशनल मैचेस ऑफ अ क्लब इज लाइक वॉचिंग द्रविड प्ले ओवर सहवाग. ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट दैट. लेकिन पता नहीं यार, मतलब वो एक अलग ही एलिमेंट देता है इंटरनेशनल मैचेस, स्पेशली टूर्नामेंट फुटबॉल होते हैं तब अलग होता है. लेकिन हाँ, आई अंडरस्टैंड, नॉट लाइक क्लब फुटबॉल. Deepak Chahar is the one I look forward to see again. Unfortunately, he's a standby only for the World Cup. Why does Southgate get so much hate from the fans? Because Southgate, the kind of talent he has, bro, usko people feel that he should play better football. Yes, football is about results, but at the end of the day, by English fans and generally fans in general, think that talent बहुत ज़्यादा है. मतलब think about some talent in England squad. हम again बात करेंगे डिटेल में आज रात को ABFC. लेकिन आप देखिए, Phil Foden is there, you have a Reece James, you have a Trent, you have basically as in मतलब proper talent में बोलो, Sancho, you have Bellingham, मतलब that kind of talent जो भरा हुआ है ना इंग्लैंड सेटअप में. John Stones for example, तो it's crazy talent, bro. They have to do more with that. They have to, as in, play out with the ball. They have to really as in, instead of dogging just about beating teams, they have to kind of dominate football. और Sterling of course है, मतलब काफी सारे players यार इंग्लैंड के पास जो are pretty talented. They have to do better in terms of the game play. और बहुत ही नेगेटिव खेलते हैं, लेफ्ट बैक कोई खिलाते नहीं है, जैसे कोई लेफ्ट बैक है नहीं, और लूक शॉ को लेते हैं. बहुत ही सरप्राइजिंग काइंड ऑफ सिलेक्शंस हैं. मैग्वायर, a very strong
feeling that next two World Cups will come to South America. This one Argentina, next will be Brazil. Okay, I विशाल ये याद रखूंगा मैं. स्टार करके रख रहा हूँ ये comment. I think Bhuvi was exceptional in his prime, but he's past it now, and we need to invest somewhere else. Okay, यहाँ पे टीम दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर. तो as expected, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? Okay, so we are playing an extra batsman, obviously because 8 ओवर का मैच है तो भाई तो पेलेंगे, गली क्रिकेट जैसा है, ठीक है. तो एक्स्ट्रा बैट्समैन है और दीपक चहर नहीं खेल रहे, और लुक्स लाइक इंडिया आर जस्ट इन्वेस्टिंग द पीपल और गोइंग टू द वर्ल्ड कप. यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है भाई? ऑस्ट्रेलिया आई डोंट थिंक दे हैव मेड. डैन सैम्स आ गए, ऑलराउंडर इज प्लेइंग. शॉन एबर्ट इज आल्सो प्लेइंग. ही इज आल्सो एन ऑलराउंडर फॉर पीपल, बॉलिंग ऑलराउंडर शॉन एबर्ट. तो आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा वो. तो लुक्स लाइक दोनों ही टीम्स बैटिंग में स्ट्रांग गए हैं. एंड लेट मी एक्चुअली पुट इट अप ऑन स्क्रीन एज वेल. इंडिया प्लेइंग 11 पीपल, कमेंट करिए. और यहाँ पे पाकिस्तान का क्या हुआ है भाई? मीनवाइल दोनों की हाफ सेंचुरीज हो गए, डकेट और ब्रुक के. 169 फॉर 3 इन 16 ओवर. भाई साहब आई थिंक गई यार पाकिस्तान आज तो. मतलब आई नो अगेन 200 पार्टनरशिप हो जाए, हु नोज, राइट? लेकिन इंडिया प्लेइंग 11 अपने स्क्रीन पर है. पीपल, व्हाट डू यू थिंक? राहुल, शर्मा, कोहली, सूर्या, ऋषभ, हार्दिक, दिनेश, अक्सर, हर्षल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. भाई नंबर 9 तक बैटिंग आती है उन लोगों को, ठीक है. और जसप्रीत बुमराह, यूजी. लेकिन बॉलिंग में यू हैव अक्सर, हर्षल, जसप्रीत, यूजी और हार्दिक. तो बेसिकली हार्दिक शायद एक और बॉल करे, दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग. Yeah, Mason Mount, in terms of, I was talking about natural talent, skill-based talent. He's very good, but again, in terms of skill, I would not put him at the peak yet. He's definitely there, but he's building a lot of skills yet, bro. But like as a player, I would definitely count him right up there, because I think it's not just about talent. You have to have more than that. That's what Mason Mount gives more. लेकिन कोई नहीं. Okay, let me see. ऑस्ट्रेलिया के देखे. ओके, दिस ये मैं लाइव बता चुका हूं एक बार, और मैं आई डू नॉट लाई. लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली एवरीवन, लेट्स नॉट spoil the stream. I have been courteous enough to actually come out, speak about that. Let me not repeat it again and again. I did not lie, and I'm proud of my achievement. Okay, and you are no one to tell me that. Plus, I have put a post in my community. Go and check it out if you want any clarifications. Thank you for subscribing. Much love to you. Okay, so ऑस्ट्रेलिया का ऐसा है, देखिए. ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 इज दिस पीपल: एरन फिंच, कैमरन ग्रीन, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, शॉन एबर्ट, Tim David. I think Tim David will come before Sean Abbott, I guess. Then you have Matthew Wade, Pat Cummins, Daniel Sams. So again, no players जो proper कर सकते हैं. No players who can proper bat. लेकिन in terms of bowling options, ऑस्ट्रेलिया के पास है एक ग्लेन मैक्सवेल. तो they have more options apart from India, I guess. They have Sean Abbott. Tim David can bowl a little bit. Then you have Pat Cummins, Dan Sams, Adam Zampa, Hazelwood, and Glenn Maxwell. So they have 7 bowlers who can bowl versus India, who just have 5 bowlers who can bowl. So that is going to be interesting. Of course, maximum 2 overs कर सकते हैं. So supposing someone gets hit in the first over, you basically have that luxury for as Australia to basically have a change which India don't have. So what do you all think about that? Let me know. Okay, Harshal Piteka भैया, noted. Oh my God, let's see bro. Again, मतलब मुझे लगता है हार्दिक को बॉल करना पड़ेगा. I don't think he can get away. We cannot have basically 4 bowlers bowling 2 overs. Again, I believe so. Maximum 2 overs means that in any game of cricket 5 overs, so 5 bowlers to use करना पड़ता है भाई अपने को. So I don't think we can have all the overs bowled only by 4 overs as per the rule. So I think maximum 2 means 3 bowlers will probably bowl 2 overs each, and 2 bowlers will bowl 1 over each. तो उसमें हर्षल, I'm okay. आप लोग बोलिए, in a condition as such जो नागपुर में है, wet pitch, and of course there was something for the spinners as well. What do you think? Will it be a spinner who's going to bowl that 2 overs, or will it be a Harshal who will bowl the 2 overs? For me, India might actually, because Australia ka a lot of right-handers are there. Remember, Aaron Finch, Cameron Green, Steven Smith, Glenn Maxwell,
टिम डेविड सब राइट हैंडर्स है, तो मे बी चहल को दे 2 ओवर, दैट्स व्हाट आई एम गेसिंग. Or maybe the fact that you can say that nahi, Harshal is coming back from injury, give him proper attempt to bowl those 2 overs as well. I don't know, man. Jasprit or Harshal maybe 2 overs, then you have Chahal maybe 2 overs, and Aksar maybe 1 over. Nahi, Harsh on Aksar after that performance definitely. इवन बुमराह कैन बैट 35 रन ओवर. और हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. इंग्लैंड आज हार जाए यानी रेलेगेशन फेस करे, मजा आएगा. अरे भाई देखते हैं इन द फुटबॉल, विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट इन अ कपल ऑफ आवर्स स्पेशली. तो डोंट फॉरगेट दैट पीपल. बाय द वे, पाकिस्तान का क्या हुआ यार भाई साहब? इंग्लैंड पेल रही है अभी तभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट 176 for 3 in 16.5 overs. So looks like basically it might be a score of 220. That's what I'm guessing. आप लोग बोलिए कितना मारेगी इंग्लैंड, एंड साथ साथ में ये भी बता दीजिए कि ऑस्ट्रेलिया कितना मारेगी 8 ओवर्स में. व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? फर्स्ट बैटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही है, ऑफ कोर्स. इंडिया जीती टॉस एंड इंडिया आर बॉलिंग फर्स्ट एज एक्सपेक्टेड. Pat is one player I like very much. Humble lad. Okay, fair enough. Imagine. Okay, Darren, I hear you, bro. कोई नहीं. Bumrah, Shami, Deepak, Harshal, Prasidh would have been my pacers for the World Cup. हाँ वही है, मतलब वी आर टेकिंग वन पेसर लेस. एक तो ये चीज है प्रथम, बिग अप आपको प्रथम आने के लिए. लेकिन हाँ, सर्टेनली अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वी डोंट हैव पेस, रॉ पेस नहीं है. Only we have in Bumrah, तो वो unfortunate रहेगा, as we have been speaking for the last couple of streams. 4 bowlers can bowl 2 overs each, भैया. Okay. Are you 100% sure? I'm still feeling that that might not be the case. Again, let me know अगर you have confirmation on that. मैं देख रहा हूँ वहां पर if somewhere is written, but again मैंने सुना नहीं है audio because of copyright हो जाता नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. For me, Bumrah 2, UZ 2, Aksar 2, Hardik 1. Okay. So basically, you are saying that it will be Harshal and Hardik who will be sharing that 1-1 over. Might as well give Kohli 2. You know what? इस conditions में who knows that Kohli को basically मारने jar out हो जाए. You never know. Okay, I don't know what's Indian team future. We're not producing enough all-rounders. If Hardik is injured, we have yeah, as in देखिए हार्दिक वर्ल्ड क्रिकेट में he is one of the best आज के दिन में. तो I don't think you can basically expect that. लेकिन हाँ, we don't have options in plenty. इसलिए lot of people saw that definitely. शिवम दुबे आए थे बीच में, and of course we had वेंकी आयर. तो काफी लोग इतना हाइप अप कर दिए थे, लेकिन I don't think they have even close to bowling is what Hardik has. Not that Hardik is superb in bowling, he's pretty good. With the performance that Chahal has been giving, it is being proved that he was rightly dropped in the previous World Cup. Again, Pratham, मतलब वही है. I would put Chahal in the form as temporary classes permanent वाला bracket. हाँ मतलब maybe आप बोल सकते हो I'm an RCB fan, I'm a Chahal fan generally speaking. लेकिन I feel that the guy is actually knowing what he bowls much more than many other spinners in the world. So I think you have to give him that. Plus यार जिगरा है उसमें, he actually gives it all. और plus for the dressing room, I believe that he's important. वो एक factor होता है, especially in tournament big as World Cup. England does have a, but हाँ फॉर्म में नहीं है. चलो भाई शुरू हो रहा है. एवरीवन इन द चैट बताइए कितना मारने वाली ऑस्ट्रेलिया. गेट इन योर प्रेडिक्शंस इन द चैट. 8 ओवर्स, हार्दिक पांड्या बॉलिंग द फर्स्ट ओवर. बॉन्कर्स. मे बी रोहित शर्मा सोच रहे पहला ओवर में मारेंगे नहीं भाई, हार्दिक पांड्या को देते और स्विंग हो जाए, और मे बी हार्दिक पांड्या न्यू बॉल से बाउंस करेंगे, पता नहीं क्या करने वाले. लेकिन लेट मी नो कितना होगा. इंग्लैंड डज हैव एन अमेजिंग स्क्वाड, बट प्रॉब्लम इज दैट ऑल ऑफ देम. Okay, I think it's probably time to basically block this person because I don't think he understands English. भाई बेन कॉलर जो भी हो ना, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश प्लीज गो गेट अ लाइफ. ठीक है, मैं डिक्शनरी प्रोवाइड करूंगा, जाकर कम्युनिटी पोस्ट देखिए मेरा. ठीक है, डोंट स्पॉइल माय मूड, डोंट स्पॉइल एवरीवन्स मूड हियर. अरे ऑलमोस्ट आउट हो गया भाई. तो आई हैव पुट अ कम्युनिटी पोस्ट, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट एंड आई एम प्राउड ऑफ माय अचीवमेंट. यू आर नो वन टू फकिंग टेल मी हु आई एम एंड व्हाट आई डिड. ओके, so first of all, if I am corrected myself, I know what I'm doing. Okay, so अगर आप मेरे जितना FPL खेलो ना 20 साल में, come and show me that, bro. Come on. If everyone says FPL, for me generally is fantasy league, and I won fantasy league में, bro, and you are no one to fucking tell me. That's Ben Collar I'm talking about, who's providing bad comments unfortunately. But anyway, भाई second ball हो गया है and छक्का. सेकेंड बॉल छक्का भाई.
सेकंड बॉल छक्का, दिल स्कूप खेला है भाई फिंच ने. एंड yeah, the next time, mods, if the next time this person comes in, I would like this person to be blocked, because I don't want, rubbish to kind of go around. I don't like them, simply put, and that's my call, right? लेकिन हाँ, again, let's enjoy the stream, everyone. Thanks for coming on again. लेकिन यहाँ पे सेकंड बॉल ही छक्का मार दिया भाई फिंच ने. नहीं, चौका हुआ है, चलो वन वन बाउंस पे गया, चौका हुआ है. एंड थर्ड बॉल गंदी बॉल, फुल टॉस हार्दिक का. हार्दिक, हमें पता है भाई, पहले 2-3 बॉल वार्म अप डिलीवरीज होते हैं हार्दिक के, तो एक ओवर में भी ऐसे वार्म अप करेंगे तो कैसे चलेगा भाई. लेकिन होता है, कम ऑन, मे बी द बॉल इज स्लिपिंग, आई एम गेसिंग, इन दीस कंडीशंस, आई डोंट नो. लेकिन इंग्लैंड का 187 फॉर 3, डकेट और ब्रुक आउट ही नहीं हो रहे यार. England does have an amazing squad, but problem is that all of them don't click. Yeah, that's true. Okay, I'll just skip a few comments if you don't mind. नहीं यार, 90 minutes football news about Chelsea. कौन सा वाला बोलो Darren? Especially if you can just put that, it'll be great. But then Ankit, I feel in the modern T20 we need a new age leg spinners like Rashid, Zampa, etc. and not the conventional ones. I don't know about that, bro. मतलब, I feel wicket taking is probably more important. I genuinely believe that, or he's a wicket taker, Chahal. हाँ, not that मुझे अच्छा लगता है that he gives a lot of loose deliveries. I'm not saying that. लेकिन मुझे लगता है that is just that he, off late he's been hit or sussed out. Rather, प्रथम आप बोलिए, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. I know that you're not saying that, but Washington Sundar versus the Chahal, you can't even compare. Washington Sundar is more like a modern day kind of bowler who kind of darts your ball in. Us kind of bowler, man, he doesn't take wickets, bro. That's what I'm saying. Rashid, I think he's a different class altogether. Zampa भी मैं बोलता हूँ he's not very unconventional. मैं उसको unconventional नहीं बोलूंगा, but कोई नहीं. 8 ओवर का मैच है भाई, 8 ओवर का मैच है, पहला ओवर चल रहा है एंड बाउंड्री भाई फिफ्थ बॉल में, वापस से फिफ्थ बॉल में बाउंड्री. और ये मजा आएगा भाई, इट इज मजा आएगा, बिकॉज इट इज बेसिकली अ शॉर्ट ओवर. सब लोग भाई, हम लोग 8 ओवर का हमेशा खेलते थे भाई. 8 ओवर मैच गली क्रिकेट में हो जाए भाई, फील्ड में भी मैं खेलता था टेनिस बॉल क्रिकेट से, मजा आता भाई. मारने जाते हो हर 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 गेंद को, वही होने वाला है ये. ओके, don't worry, 2016 RCB soul coming in a top 3 batters. Oh my god, Vishal, I hope so, bro. Oh, what a ball! What a delivery, bro. This is a dream delivery for a swing bowler, man. हार्दिक पांड्या लास्ट बॉल क्या कर दिया, उस बॉल से शायद मैं टेम्प्ट हो जाऊं हार्दिक पांड्या को सेकंड ओवर देने के लिए. क्या बोलते हो, विल हार्दिक पांड्या बोल अ सेकंड ओवर और नॉट इन द चैट? और सब लोग 8 ओवर में कितना मारेंगे भाई? प्रेडिक्शंस नहीं है, बता दीजिए सब लोग. अच्छा, मेरे प्रेडिक्शंस है ऑस्ट्रेलिया मारेगी 8 ओवर्स में. विल दे स्कोर 100? आई थिंक दे प्रॉब्ली विल, जस्ट अबाउट. लेकिन मैं जा रहा हूं, चलो 101 का प्रसाद 101 का बोल रहा हूं, लेकिन विकेट्स डजंट मैटर, कम ऑन, इट्स एन 8 ओवर्स मैच. लेकिन 101 इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया विल विन. व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस इन द चैट? लेट मी नो कितना मारेगी ऑस्ट्रेलिया. 1 ओवर 10 फॉर नो लॉस है एज थिंग्स स्टैंड, राइट? और वहां पर इंग्लैंड अभी तक मार रही है भाई साहब, दोनों ही 64-63 पर खेल रहे हैं बैट्समैन. एंड यहाँ पे पाकिस्तान के लास्ट 2 ओवर्स बाकी बॉलिंग में, एंड 196 हो गया, तो लुक्स लाइक वहां पर 225 भी बन सकते हैं इन द बेस्ट केस सिनेरियो. ओके, 100 बोल रहे हैं अली गेमिंग, एंड इंडिया विल स्कोर 101. ओके, आई होप सो. एंड 84 फॉर 3 ऑस्ट्रेलिया विल चेज. ओके, नाइस वन. 84 फॉर 3 विल बी गुड वन. अरे सेकंड ओवर ही अक्सर आते हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्विंग हो रही थी बॉल. ये गंदी कैप्टन थी रोहित शर्मा की, लेकिन अरे भाई साहब, कैच था, कैच ड्रॉप्ड ब्रो. वेरी डिफिकल्ट कैच, बहुत ही ऊंचा गया था बॉल, बहुत ज्यादा ही ऊंचा गया था. लेकिन यू हैव टू से दैट इन टुडेज डे इन एज यू एक्सपेक्ट अ विराट कोहली टू कैच दैट. आई नो थोड़ा हार्श है, बट इट इज व्हाट इट इज ब्रो. अक्षर पटेल कमिंग सेकंड ओवर, डू यू अग्री? कैमरून ग्रीन अगेन. अक्षर पटेल वाज अ गुड बॉलर इन द लास्ट मैच, और कैमरून ग्रीन अगर किसी के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे थे इन द लास्ट मैच, इट वाज अक्षर पटेल, तो इसलिए शायद लाए है. बट आई डोंट पर्सनली अग्री विद दिस. दिस इज पैथेटिक, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट मॉडर्न डे इंडियन क्रिकेट. यार कैप्टन भूल जाते हैं, स्विंग होता है ओनली फॉर द फर्स्ट 2-3 ओवर्स, स्पेशली इन दीज कंडीशंस, और यू कैन नॉट मिस दैट. हार्दिक पांड्या का लास्ट बॉल भाई, गजब स्विंग हुई थी बॉल.
You had to play a swing bowler in that second over, or you had to get on a fast bowler, in my opinion. हाँ, मे बी थर्ड ओवर में लाते भाई अक्सर को, आई वुड से, लेकिन अगेन कैच आया था तो आई कैन नॉट आर्ग्यू दैट. 120 फॉर 4 बोल रहे हैं, चलो मैं 101 बोला हूँ, अली गेमिंग 100 बोले, संजीव 92 फॉर 5, सायन 77 बोले हैं, और मुदित 84 बोले हैं, और थियोबोल्ड बोले हैं 90. इंटरेस्टिंग. 90 minute reporter said Potter said to Todd Burley to get him Nico Barrea. Okay, as both Jorginho and Kante contract running out. Okay, interesting. Again, मैं यहाँ पे ट्रांसफर न्यूज तो नहीं लेने वाला यार अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेकिन यहाँ पे आउट हो गया है. आउट हो गया भाई. मैं आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग फॉर अ चेंज, बट कोई नहीं, होता है. डेरेन बॉल 120, ऑस्ट्रेलिया 75 फॉर 2 in 8, और रन आउट हो गया भाई. हाँ, अगेन अक्षर पटेल की बॉलिंग की वजह से नहीं हुआ ये, रन आउट हुआ है, तो आई एम नॉट टोटली रॉन्ग इधर. नहीं, रिजवान एंड बाबर. ओके, चलो, ऑल द बेस्ट यार. अच्छा मैच होगा वो भी, एब्सोल्युटली अच्छा मैच होगा, लुक्स लाइक. एंड 104. ओके भाई, सीएफसी ब्लूज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगेन पीपल से इग्नोर भाई. लेट मी टेल यू, अगर कोई चीज आ नहीं रहा है तो आप क्यों उड़ाना चाह रहे हो उसको, क्यों उड़ाना चाह रहे हो भाई? आई थॉट यू लव द चैनल एंड यू लव आवर कंटेंट, and I love you the fact that you support us, but don't kind of especially ask for something which is absolutely nothing. People make fuss out of anything because they want to make, because there are haters. ठीक है, I am proud of what I've done in my life and I don't need to prove to anyone. और मैंने actually, मेरे पास proof है. If someone really wants it, come to me. ठीक है, simple as that. And let's end it. I have put in a community post, जाकर पढ़ लीजिए. I have there are about 75 likes, जाकर पढ़ लीजिए. Simple as that. And yes, I absolutely respect that fact. लेकिन वही है, थोड़ा सा even when some things need not be touched upon, let's kind of just move over it, right? Let me actually move over it, because यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे को हेट करने के लिए. I know, as a matter of fact, I know that, but not everyone who's supporting, much love to you all. बाउंड्री हो गया यहाँ पर यार. अक्षर पटेल has conceded a boundary. कोई नहीं, फिंच मारे है बाउंड्री, एंड 18 for 1 है अभी भी, 1.4 में. ऐसा नहीं है कि एकदम पिट गए हैं. इंडिया नीड्स टू सेपरेट द T20 ODI एंड टेस्ट स्क्वाड. प्रदीप भाई, हम तो काफी समय से बोल रहे हैं स्ट्रीम्स पे दैट इट्स हाई टाइम दैट दे डू दैट इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग, और वो सब जो होता है प्रॉपर कर दो भाई, अलग बस. दैट इज इवन बेटर. अरे यार स्विच इट, बहुत फनी था स्विच इट, बट कोई नहीं. ओ भाई साहब, स्विच इट. ओ भाई, 60 रन दे दिया. ओ भाई साहब, ये तो दिखाना पड़ेगा यार. सॉरी, मतलब जस्ट शोइंग द स्कोर कार्ड फॉर व्हाट द अपडेट इज. ठीक है, लेकिन पीपल यहाँ पे पाकिस्तान इंग्लैंड का देखिए. ओ माय गॉड, दिस इज लाइक अ प्रॉपर बैंगर ऑफ अ मैच होने वाला है यार. मतलब पीपल डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस आल्सो. अगर आप देख रहे हो साथ साथ पे, 211 हो गए और एक ओवर बाकी है, तो लुक्स लाइक 225 होने वाला है, वेरी मच सो. लेकिन लास्ट बॉल बोल हो गए भाई. आई वाज प्रूवन रॉन्ग एंड आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग इन दिस, बिकॉज अक्षर पटेल हैज गॉट अ विकेट. 2 overs 19 for 2. ब्रिलियंट कैप्टनसी पे रोहित शर्मा फॉर चेंज, अनलाइक जो मैं बोल रहा था. लेकिन भाई, मतलब यू हैव टू गिव इट टू अक्षर पटेल हिमसेल्फ, क्योंकि ही केप्ट हिज कूल. और बहुत ही इंटरेस्टिंग ओवर, ही गॉट 1 डॉट बॉल एंड 2 विकेट्स, जो थे बेसिकली डॉट बॉल्स एज वेल. I know 1 run out था, लेकिन whatever it is, you have to give it to Akshar Patel. भाई, the guy has come back और looks like he is the man in form. कौन बोलता 3 महीने पहले, किसी ने इमेजिन किया था that Akshar Patel will be the main man in form when it comes to India's bowling. That is what Akshar Patel is, and that is what T20 gives you. That's what things happen. हाँ यार, अली गेमिंग इंजर्ड तो है, लेकिन वो ये 2-3 हफ्तों के लिए. अली गेमिंग इज नॉट एज बैड एज व्हाट इट लुक लाइक इनिशियली. डोंट वरी अबाउट इट सो मच. आई वुड सजेस्ट लेट्स गो. यस, बिल्कुल, बुमराह इन डेप्थ. चलो, अभी मैं दूसरे मैच में देख रहा हूँ क्या हो गया यार. चलो, एक बॉल हुआ है बस, तो 2 बॉल हो गए, 212 हो गए भाई इंग्लैंड के. तो लुक्स लाइक 220 होंगे, 4 बॉल बाकी है. बट एवरीवन, देखते हैं किसका प्रेडिक्शन राइट होगा. मतलब 2 ओवर में 19 रन हुए ऑस्ट्रेलिया के, एंड 1 over has been bowled by Hardik and 1 over has been bowled by Akshar.
So let's see what's going to happen there. Okay. MSG to Rohit. शाबाश बेटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, शाबाश. Maxwell getting out, भैया, laughing outside but trying inside. Okay. मतलब अगेन इट्स इन 8 ओवर मैच, तो आई डोंट थिंक इतना जज करेंगे. भाई चहल आ गए, एक स्पिनर विकेट लिया ना, तो चहल आ गए थर्ड विकेट. और स्विंग तो भाई हम इस्तेमाल करना आता नहीं हमें, खाली 6 बॉल के लिए स्विंग यूज किए, और वहां पर एज मच एज विकेट गिराए, इन माय ओपिनियन स्टिल स्टिक टू दैट हमें स्विंग यूज करना चाहिए था इस कंडीशंस में. वी हैव नॉट यूज्ड इट एट ऑल. दैट इज अ प्रॉब्लम. दैट इज अ नेगेटिव माइंडसेट इन माय ओपिनियन. ओके, एनीवे, बट कैप्टेंसी tactics I understand totally, it's not bad at all. लेकिन वही है, instead of second and third they could have come on in third and fourth. First couple of overs में at least swing इस्तेमाल करना चाहिए था in these conditions, in my opinion. Strong opinion है मेरा वो काफी उसमें, लेकिन कोई नहीं. चहल bowling 2 short balls, लेकिन luckily पिटे नहीं अभी तक, कोई नहीं. ओके, ग्लेन मैक्सवेल डकआउट हो गए थे बाय द वे फर्स्ट बॉल में. ओके, चलो यार, मैं आई थिंक देयर इज इनफ ऑफ इट. आई थिंक this is my channel. You are no one to come and tell me भाई ब्लॉक कर दो यार, टाइम आउट मत करो भाई. I just request every mod there, if this person comes again by whatever name, and I'm telling you every mod here, if this person comes and everyone who's spreading shit on my own fucking channel, okay, let's not spoil the stream. Okay, this live chat person who's coming and shitting on my channel, I want this guy to be blocked the next time he comes. I want this guy to be blocked, not timed out. Okay, I want this guy to be blocked. I repeat it. Okay, the next time it comes. And I don't want this shit to continue in any of my streams. I know my language is not good, mods, but I hope you can understand. For someone who has worked hard, his ass off, and I've basically followed the sport like it's my religion for the last 25 fucking years, and I've given 1.5 years for the things that I've sacrificed, and I've won things in my fantasies. You are no one to come and tell me who I did and who I did not do. Okay, and let me get that right. And I'm hoping and praying that other content creators support me in this. It's fucking easy to come and just say something, okay, keyboard warriors. Okay, I have the audacity to say something live. I have the audacity to come back and correct it live. I have the audacity to put in a community post live. Go and check it out, you illiterates. That is that one person I'm referring to who is creating shit in my streams. And this is what he wanted probably. Yes, I know that. But it doesn't matter. I have to make it a clear thing. I want this to be please clipped and sent everyone. I have followed the sport like a religion. I will challenge anyone who's a better fan than me. I will challenge anyone on anything who knows more than me. Come on, bring it on, bro. मुझे मालूम है मेरी लाइफ का यार. Who are you? What do you know about my life? 25 साल में मैं जो क्या हूं मुझे मालूम है. ठीक है, last for 25 fucking years. You were fucking not born when I knew stuff. You don't know about what I've done in my fantasy leagues over the years, how much time I've spent in that, and how much I've won. And I've said something, and I've corrected it. Yes, there was a mistake, but it wasn't a lie. Let me not go on and on about it. I made a community post clearly, and it is for everyone to read there in public. I really want this thing to go to everyone fucking content creator as well. These fucking content creators, they don't support me in this thing where I've been literally been tortured for the last couple of weeks. I'm sorry, bro. Everyone supports me fine, but you have to come out. In that post I made, there was not a single person who actually supported me, who actually thinks that basically it is a fact, who believes that I know more. It is only my subscribers, and that is why I love my subscribers. It is my almighty family, and I know things जो दिखता है वो होता नहीं है. बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है भाई. It's very easy to make you look good. Okay, let me be very honest. I fucking know more than everyone here, and I
I'm telling you, I know more than anyone in India, man, when it comes to football. Challenge me. Challenge me. That's why fucking they don't call me. Everyone is insecure. You are haters because you're insecure. Because you know that this guy knows so much. He has dedicated his life to sports. You don't know head or tail about my life, bro. Whoever that person is. And yes, it's a cricket stream with Pakistan, England, and India, Australia. But I have to make certain things very, very clear. You cannot torture me. You cannot. I am not going to get into that phase where I get tensed about things coming in, giving me hate. Because I don't deserve it. I don't deserve it. I deserve much more love than what I've been getting. Yeah, probably they wanted to rile me and I've got riled. Yes, but I have to make myself very, very clear. People watching, it is my channel. I will tell the way I want. Yes, मैं यहाँ का कटोरा लेकर भीख नहीं मांग रहा हूं आप लोग के लिए. Who is loving me knows me very well that how genuine I am. Everyone knows me. I do not fake like people. Yes, I'm saying it. I do not fake like people. I don't have double standards. I am a true fan. I have not become a fan of Man City just because Man City का कोई viewers नहीं है. Let me not open up and say some things, okay? I respected everyone. I give support everyone in the community. You are no one to put me down. And I'm pretty sure ये किसके भक्त आकर कर रहे हैं लोग. I know that also. मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं. समझे क्या? 35 साल का भाई. I've seen life more than you guys. Anyway, let's continue, people. I had to do that. Yes, it's not going to be good for the stream and the channel, but I had to do that. Let's get it right. People are projecting themselves to be very good, and I am actually genuine, and I have been projected to be bad. People are fake. I am not. And again, I'm not naming anyone. You can assume whatever the fuck you want to assume. Because that is what assumptions are the mother of all fuck ups, and that is what the world is about. You can make assumptions and judge me to the core you fucking want. I fucking don't care. All I know is what I am doing is not wrong. What I did is not wrong. A portion of it was not absolutely correct, and I came and corrected it in public. No one in the community will have that guts to do that. And I'm proud of my achievements. You have no one to tell me. You don't know how much I've invested in the sport that I have for the last 25 years. कोई नहीं यार, मतलब thanks Mudit. I know that it was pretty longer than what I expected, but कोई नहीं. It's 35 for 4 overs. And let's calm ourselves down because there are 2 streams happening. That's very important. And again, I cannot thank everyone who is right now watching and genuinely here, not to see me ranting, but actually here for the content and that's just my knowledge about the sports. Okay? I really, and who actually feels me like a friend, because for me, it is an almighty family. I genuinely believe it. I have to say, I was the first person in Indian community football where I allowed subscribers on my channel the way I did, and that was misused. This is a proof. I genuinely want you to, I don't see you as just subscribers. I see you as folks that I spend time with. Okay? Anyway, बाउंड्री हो गई यहाँ पे. एंड एक सेकेंड, मैं पाकिस्तान का मिला 221 हुआ है पीपल. 222 है टारगेट पाकिस्तान के लिए. तो लेट मी नो उसमें क्या होने वाला है.
अरे आउट आउट और नहीं यार, नहीं हुआ, कम ऑन, कोई नहीं. फिंच भाई, फिंच हैज कम टू फॉर्म बाय द वे, जस्ट फॉर एवरीवन टू नो. एरन फिंच लास्ट आई थिंक 10 गेम्स में और समथिंग लाइक दैट, he hadn't got a score more than 20 more than once. Only एक बार ही मारा था भाई, और अभी देखिए फॉर्म में आ गया, थैंक्स टू इंडिया. बट दैट हैपेंस, कोई नहीं. हाँ यार, पानी तो पीना बनता है भाई सायन, थैंक्स यार, थैंक्स. पानी तो पीना बनता है डेफिनेटली. हाँ यार, पानी है, कॉफी नहीं है. पानी है. हाँ यार, सॉरी डराने के लिए यार, मतलब कोई नहीं, इट वाज नॉट मेंट फॉर अदर्स. अगेन पीपल वाइल क्लिप इट एंड विल डू अदर थिंग, बट अगेन हम तो देखिए यार, पीपल कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड बिकॉज ऑफ द वे आई एम हम्बल. लेट मी गेट इट राइट, व्हेन आई वांट टू बी बैड आई कैन बी रियल बैड. I can be real bad. I have been used even in the community by a lot of people, but again, I don't care. I've seen life enough, and I know what I'm talking about. हम तलवे नहीं चाटते यहाँ पे, सिंपल सा बोल रहा हूँ मैं. Everyone in the community care about their own asses, ignore the chutias. I love you. अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल, थैंक्स यार देन, बिल्कुल. यहाँ पर बिल्कुल यार, मतलब वही है. आई डोंट वांट टू ओपन अप पब्लिकली, बट अगेन पीपल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट देम अस्यूम. एनीवे, बुमराह बॉलिंग पीपल, बूम बूम बुमराह बॉलिंग, लेट्स सी इफ ही कैन डू समथिंग. अगेन ग्रेट टू सी, बुमराह बैक. अरे डरेन भाई, 1,000 रुपीज भाई, मतलब I can't thank you enough, bro. I can't thank you enough again. I have no words to say, yaar. I just realized now. But much love to you, bro. Darren, really, I don't know if this kind of rant deserved it. Lekin the fact is, by at the end of the day, for me, I genuinely like today. If I have to genuinely, koi mujhe puche na, who are my best friends? For me, it is my subscribers who are my best friends. I genuinely believe it. I know that. और subscribers जो आते हैं, जो देखते हैं चैनल, जो सब्सक्राइब करके भूल नहीं जाते, those are my best friends because I know the kind of things I've sacrificed in my life. No one knows about me personally, and I've never opened up for a reason. And they have not, and I can guarantee you, सब लोग के problems होते हैं, I can guarantee you उनके 50% problems भी नहीं होंगे जो मैंने फेस किया लाइफ में. तो I genuinely believe, मैं खुद बोल रहा हूँ, I genuinely believe much more respect, and I hope someday people look up to me the way I genuinely I believe I deserve. But anyway, Finch and Rohit in terms of form are similar to each other a bit recently. Oh, out ho gaya bhai, what a ball! What a ball by Bumrah, bhai. Bumrah is back. Come on, bro. Jasprit Bumrah is back. Come on. That's great. Jasprit Bumrah is back. What a yorker. हाँ, kind of low full toss था, but come on, I'll call it a yorker. Genuine, wicket gira. Or bhai, when a bowler gets the stump out of the ground, that is the best scene for anyone, in my opinion. Absolute best scene for anyone, यार. वो clear मैं बोल रहा हूँ. But bhai, what a brilliant delivery, yaar. What a brilliant delivery. Brilliant. Okay. बिल्कुल यार, बूम बूम बुमराह भाई, कम ऑन आदरी मैन, गुड स्टफ. तो भाई 46 for 4 हो गया. अरे CFC Blues man, again much love to you as well. See भाई, मतलब I know that this moment was not about asking for super chats, but the fact that you guys have done it again, certain people I will never forget. And मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, wherever we, when I say we, it's basically me and all of you. I consider it's almighty family. Wherever we head from here, no matter what, there are certain folks I will never forget, and again, these are some of them. And again, shout out देना चाहूंगा यहाँ पर quickly मैं सायन को, संजीव को, CFC Blues, इंद्रानील को, आदरी, विशाल, अली गेमिंग, SS रावत, वना बज, Mudid, that is, then we have Theobald भाई, मतलब of course डेरेन है, मतलब काफी लोग हैं भाई. आप लोग सब लोग basically you have no idea basically the kind of love that I have for you all, genuinely. Because again भाई, आज के दिन में ना, it's very easy to go with someone where आपको कुछ return चाहिए, but I don't think यहाँ पर आपको कुछ return मिल रहा है apart from the content that I'm providing, apart from हम जो discussions करते हैं. तो यहाँ पर it's clear that यहाँ पर आपको कोई, मतलब it's not a give and take kind of मामला. तो again, आपने किया super chat CFC Blues, so much love to you as well as to Darren. लेकिन that's what it is, as well as everyone else. यहाँ पर बाउंड्री हो गया है एक और, वेड ने मारा है, और वेड कमिंग इन नंबर 6 इज इंटरेस्टिंग. अगेन मैं सोच रहा था मे बी दे माइट हैव गॉट, आई डोंट नो, मतलब मैं स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ क्विकली फॉर पीपल हु माइट हैव मिस्ड इट ड्यूरिंग माय रैंट.
लेकिन हाँ नहीं, वो तो एक्सपेक्टेड था। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, डैनियल सैम्स नहीं आते वेट के साथ पहले तो ठीक है। मैं हाँ, टुडे आई डोंट थिंक दे हैव इंग्लिश राइट, सो आई थिंक मेक सेंस अगेन फॉर पीपल हु कैन वॉच इट। लेट मी एक्चुअली सी अभी तक क्या हुआ है। तो भाई ये हुआ है अभी तक। हाँ पीपल, एक दो ओवर में मैं रिएक्ट नहीं कर पाया फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट एनीवे 5 overs 46 for 4 हुआ है। And of course, Matthew Wade and Steven Smith are batting. Interesting that they sent Steven Smith ahead of Dan Sams. अगर लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इज दैट अ मिस्टेक कंसिडरिंग 8 ओवर का गेम है भाई, 2-3 ओवर तो डैन सैम्स को देना था कंपेयर टू स्टीवन स्मिथ। हाँ स्टीवन स्मिथ इज दैट लेजेंड ऑफ अ क्रिकेटर, लेकिन डैन सैम्स कैन प्रॉब्ली हिट यू द बाउंड्रीज। तो aren't you surprised? Even Pat Cummins, I would say, थोड़ा सा जल्दी हो जाता क्या, मतलब I'm just saying in an 8 over match you need to be a little bit more flexible. Were Australia that flexible? I don't think so. And yes, 5 overs 50 is not too bad, but in my opinion, मतलब 8 overs में the target should have been at least 100. Will they make 100? Let's see. Time will tell. अरे thanks यार अली गेमिंग, thanks अनूप as well. Shout out आपको भी भाई। जस्सी जैसा कोई नहीं, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर फॉर इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, यॉर्कर किंग इज बैक या। अरे थैंक्स यार सायन, थैंक्स अ लॉट अगेन, इट्स अबाउट एवरीथिंग। Sordeep, nice one. Matthew Wade has, oh, color blindness, really? Wow, man. Respect, bhai, respect. Respect to Matthew Wade. Malab, despite that, he does what he does, man. I have to say. Uh, Arey, thanks, Yarindra. Much love to you. Today, my boss insulted me in front of everyone. Exact same. Oh, bhai sahab. Bad, yeah, bad to know that. Darren, koi nahi. Much love to you, bro. Do DM me about it, bro. If you want to talk about it, Darren, no problem. We can always talk on. By the way, I'm always a message away. Yes, jitna bhi time mile, I can do that. I'm open to subscribers. You know that. अरे नाइस शॉट बाय वेड, कोई नहीं, बाउंड्री हो गया। ओके सो पीपल इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, हर्षल has really surprised, not given much runs, very good. हर्षल पटेल जैसी वो कमेंट आया स्क्रीन पर, बाउंड्री दे दिया हर्षल पटेल ने, लेकिन कोई नहीं, मतलब होता है। आई एम नॉट सेइंग पनौती भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग, सायन मच लव टू यू। हर्षल अर्शदीप के बदले में शामी को खिलाना चाहूंगा भाई, लेकिन शामी इज अ स्टैंड बाई। आई डोंट थिंक इंडिया लाएंगे अनलेस कोई इंजरी हो इन द फर्स्ट 11, फर्स्ट 15, और वो हम चाहेंगे नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट। ओके इंटरेस्टिंग, दैट विल बी गुड वन, दैट बी गुड वन, सीएफसी ब्लूज। World Cup, Spain and Germany, are they dark horses? Because people are ignoring them and going for Brazil, Argentina, and France. By Germany has not looked good, to be honest, यार। By the way, बैटिंग शुरू होगी पाकिस्तान की वहां, मीनवाइल 1 ओवर में 7 रन हुए। तो अगेन फॉर पीपल हु मिस्ड आउट द फर्स्ट इनिंग्स, अगेन यू कैन से दैट पाकिस्तान जो सेकंड T20 में दिखाई थी, दे आर स्टिल फेवरेट, लेकिन 221 इज बिट टू मच इन माय ओपिनियन। आप बोलिए हु इज गोना विन दैट मैच, पाकिस्तान और इंग्लैंड? 221 इंग्लैंड ने मारा, तो 222 इज बिट टू मच इन माय ओपिनियन। लेकिन यहाँ पे इंडिया का क्या हुआ है? इंडिया का हुआ है बेसिकली, ओके दे हैव गॉट 59 आई बिलीव इन 6 ओवर्स। तो लुक्स लाइक एट दिस रेट 2 और बाकी है, तो 2 और में मे बी दे विल गेट टू अराउंड 85। तो 8 overs 85, नॉट ग्रेट इन माय ओपिनियन, नॉट ग्रेट। और कौन बॉलिंग करेगा लास्ट 2 ओवर्स, लेट मी नो इन द चैट। मैं दिखाने वाला हूं स्कोर कार्ड वापस से। ओके दिस इज व्हाट इट इज। Yeah, again, for people, I know that I've moved over the topic. The reason why I addressed the way that I did is because actually there are a lot of people, not one or two, there are a lot of people who are trying to torture me. ठीक है, उनको एक मौका मिल गया जो मौका था भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन लोग को बेसिकली सभ्य भाषा में समझ में आता नहीं है कोई चीज। और ये उन लोग के लिए भी, जो उनको लगता है कि भाई हिंदुस्तानी नहीं हूं मैं, जो सभ्य भाषा में जिनको समझ में आता नहीं है, उनके लिए बेसिकली ये था कि वो ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दैट इज व्हाट इट वाज फॉर, दैट इज द रैंट दैट आई हैड, जस्ट एन एक्सप्लेनेशन इफ पीपल आर वंडरिंग व्हाई दैट वाज राइट। क्योंकि
unfortunately in this country sometimes you have to raise your voice to say something, and maybe they'll understand, maybe will they not, because I know that unlike certain videos who kind of fake, and again I'm not going to take any name because I know that anyway they will assume, like in certain people who fake, rather than that yahan par I genuinely say something, ये वायरल नहीं होने वाली, I know that, I know the matter of fact, but कोई नहीं। अरे भाई एज हो गया, बाउंड्री हो गया, ओके। लूजिंग रफीनिया हर्ट्स मोर देन कुंडे, हाँ रफीनिया यार, मतलब मैंने बोला है डेरेन, रफीनिया इज अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी ऑन द राइट हैंड साइड, स्पेशली जियश नॉट इन फॉर्म, इज एब्सोल्युटली शिट फॉर्म। रफीनिया वुड हैव डन ग्रेट थिंग्स फॉर अस, लेकिन ओके यहाँ पे अगेन लास्ट ओवर कौन बॉल करेगा भाई, अगर बुमराह भी आए तो क्या लगता है? लास्ट ओवर हर्षल, हर्षल की पांड्या, आई थिंक हर्षल ना लास्ट ओवर। हेलो सिंजॉय, कैसे हो भाई? डिड यू नो बेकहम एंड लैम्पार्ड बोथ प्लेड विद आस्पा एंड ओ नहीं यार, मुझे नहीं पता था, बहुत अच्छे फैक्ट्स यार ये, मतलब नाचो इज या नाचो का तो पता है, नाचो का तो पता है, लेकिन बेकहम एंड लैम्पार्ड दोनों का आस्थमा, बेकहम का तो मुझे पता था कुछ था, लैम्पार्ड का क्या था भाई? डोंट टेल मी, आई डोंट नो अबाउट लैम्पार्ड, इज इट फॉर रियल अनूप? लेट मी एक्चुअली लुक इट अप। ओके भाई, बढ़िया बॉल यार, बढ़िया बॉल, दैट इज अ प्रॉपर बूम बूम यॉर्कर अगेन भाई। स्टीवन स्मिथ कमिंग ऑन, मतलब डू यू अग्री दैट द फैक्ट दैट डैन सैम्स और इवन पैट कमिंस कुड हैव कम ऑन, नहीं? बुमराह का जेस्चर यार अच्छा लगता है, बट कोई नहीं। अरे बाउंड्री हो गया, कोई नहीं, ही वाज ट्राइंग फॉर अ यॉर्कर एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट बुमराह, ही वाज स्टिल ट्राइंग फॉर अ यॉर्कर, ही इज नॉट नेगेटिव अनलाइक भुवी। आई नो इट माइट नॉट हैव बीन भुवी's कॉल इन द लास्ट फ्यू ओवर्स, मे बी इट इज द टीम मैनेजमेंट कॉल, लेकिन फुल टॉस बाउंड्री हो गया यहाँ पर। एंड मीनवाइल अच्छा, पाकिस्तान का 2 ओवर्स में कितना 11 हुआ है ऑलमोस्ट, कोई नहीं, नॉट अ ग्रेट स्टार्ट बट कोई नहीं, दे नॉट लॉस्ट अ विकेट लुक्स लाइक। सबसे डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस स्टेडियम में मैच का, ओके सबसे डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस यार, मैच स्टेडियम में हमेशा मजा ही आया मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई हैव बीन टू लो स्कोरिंग मैचेस, आई हैव बीन टू हाई स्कोरिंग मैचेस, आई हैव बीन टू वन साइड मैचेस। हाँ बारिश हो जाती है तो डिसअपॉइंटिंग हुआ था, केकेआर और आरसीबी के बीच में एक मैच हुआ था। हाँ ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझे, लेकिन मेरा केकेआर और आरसीबी के मैच बीच में मैच हुआ था, वहां पर 3-4 हुए थे, यूसुफ पठान वाज इन केकेआर, आई रिमेंबर द टाइम, थोड़ा मारे थे और बस बारिश हो गई थी, एंड देन आई रिमेंबर पैसे भी गए और बेसिकली टाइम भी गया, बिकॉज वो